Hello everyone, welcome to Dreams Unlimited classes. Today we discuss English grammar topic, subject and predicate. So guys, let us start. So when we write a sentence, there is two things. One thing is subject and second is predicate. So let us difference between subject and predicate. So subject means who or whom. मीन्स कि ये कौन है और किसके लिए जो वो सेंटेंस है वो कहा गया है. एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट मीन्स द एक्शन डन. मीन्स जो सेंटेंस में वो एक्शन हुआ है वो सारा प्रेडिकेट होता है. सो नाउ comes to what is subject. A subject is a person or a thing that is doing an action. मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो या तो एक पर्सन होता है या थिंग होती है जो कि कोई एक्शन वर्क कर रहा होता है. द पर्सन और अ थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ अ सेंटेंस. मीन्स कि जो भी सेंटेंस होता है उस पर अगर किसी पर्सन या थिंग पे फोकस हो रहा होता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. Now comes to predicate. What is a predicate? Means the predicate of the sentence is the part that contains the action. It means कि जो सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट होता है जो कि एक्शन कर रहा होता है वो सारा हमारा predicate होता है. And when we combine subject and predicate, it makes a sentence. Now take one example. The dog ate our turkey. So here the dog is subject and ate our turkey in red is predicate. Now take another example. The manager has changed all of his staff recently. Who changed the staff recently? The manager in red. So here subject is the manager and has changed all of his staff recently is predicate in blue. So I hope it is clear to all of you. So guys, this is end of our video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.